Good morning, dear student. Now start class 9 science biology. First chapter cell biology, fundamental unit of life. Under cell membrane and selective membrane, a special type of membrane. Under osmosis process, only one membrane to another membrane goes to water by osmosis process. So I have mentioned what will happen if we put an animal cell या plant cell into a solution and sugar solution या salt solution. यानी कोई एक सोल्यूशन हम लेते हैं और इस सोल्यूशन के अंदर प्लांट सेल और एनिमल सेल्स रख देते हैं, तो उस समय सेल्स के अंदर के कंटेंट एंड बाहर के कंटेंट में कुछ डिफरेंस होंगे. उसकी वजह से कुछ वाटर इंटर करेंगे सेल्स के अंदर या सेल्स के वाटर बाहर की तरफ आएगा. इस तरह जो है ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होने के लिए 3 स्टेप. वन फर्स्ट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. सो एंड हैव ऑलरेडी मेंशन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी बाहर का जो यहाँ कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन वाटर के अंदर यानी सेल के अपेक्षा बाहर का जो कंसंट्रेशन है वो सेल के अंदर से ज़्यादा है, यानी अंदर सेल के अंदर है, यानी बाहर के वाटर सेल्स में चला गया. इस प्रक्रिया को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे. और आइसोटोनिक सॉल्यूशन अर्थात इक्वल कंसंट्रेशन of external and internal in atmosphere and internal यानी सेल के अंदर का जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आर इक्वल है एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन. एंड देन लास्ट हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. सेल्स के कंसंट्रेशन वाटर कंसंट्रेशन मोर देन आउटर कंसंट्रेशन. सो वाटर जो है सेल से बाहर निकल जाएगा. इस तरह जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. सो नाउ स्टार्ट एनसीईआरटी बुक. अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक बात को फॉलो क्लिक कर चुके होंगे, यानी बाहर का वाटर सेल में आ जाए, यानी दोनों सेल का वाटर बराबर हो जाए, या सेल का पानी वाटर जो है बाहर चला जाए. इस तरह हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. सो नाउ स्टार्ट ऑन द one of the following 3 things could happen. First, if the medium surrounding the cell has a higher water concentration, medium surrounding of the cell has higher water concentration than the cell, meaning that the outside solution is very dilute. यानी इसका अर्थ है कि बाहर का जो सोल्यूशन है वो वाटर डाइल्यूट यानी maximum water molecules. So the cell will gain water by osmosis. Such a solution known as the hypertonic solution. And now start. Water molecules are free to pass across the cell membrane in both directions, but more water will come into cell than will leave. The net overall result is the water enter the cell is cell likely to swell up. यानी इस तरह जो है कोई भी चीज़ें अगर डाल दी गई है वो फूल जाता है. इस तरह जो है बात नेक्स्ट 2 पॉइंट की बात किया गया है. इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, देयर विल बी नॉट एक मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. सच ए सॉल्यूशन नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन. ऑलरेडी मेंशन वाटर crosses the cell membrane both direction, but the amount of going in the same as the amount going out, so there is no overall movement of water in cell will stay the same size. जैसा सेल का साइज रहा हो वैसा ही सेल रहेगा.
And the last position, if the medium has lower concentration, यानी low dilution, यानी concentration, more concentration, meaning there more concentration, but the water than cell, meaning that is a very concentrated solution, very concentrated गाढ़ा द्रव्य, यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स कम होंगे. Solution, the cell will lose water by the osmosis. Such a solution is known as the hypertonic solution. So again, water crosses the cell membrane in both directions, but this time more water leave the cell than the enter, and therefore cell will shrink. यानी इस तरह जो है सेल का वाटर जो है इस बाहर की तरफ चला जाता है, जिससे ये सेल पिचक जाती है, श्रिंक कर जाता है, पिचक जाता है. ये अंगूर से किशमिश जो बनाने की प्रक्रिया होगी वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा. सो नाइन एंड तो therefore the cell will shrink. Thus osmosis is special case diffusion through a selectively permeable membrane. So finish hypotonic solution, isotonic solution, hypertonic solution. Now and a complete. अब नेक्स्ट एनसीईआरटी की बुक के अनुसार यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एज अमीबा, यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल tend to gain water through osmosis. Absorption of water by plant roots is also example of osmosis. Thus diffusion is important in exchange of gas and water in the life of a cell. In addition to this, the cell also obtain nutrition from its environment. Different molecules move in and out of the cell through a type of transport requiring use of energy. The plasma membrane is flexible elasticity, and is made up of organic molecules called lipids, already mentioned tomorrow, and proteins. However, we can observe the structure of the plasma membrane only through an electron microscope. The flexibility of the cell membrane also enable the cell to eat, gulp in food and other material from its external environment. Such process known as endocytosis. Amoeba acquire its food through such process. Amoeba इसी माध्यम से भोजन को अपनी तरफ लेने का प्रयास करता है, क्योंकि आपको मालूम है कि अमीबा एक ही सेल के जीव होते हैं और वो एक ही सेल यानी इस सेल के अंदर सारी क्रियाएं संपन्न होती हैं. यानी इसकी बॉडी सरफेस से ऑक्सीजन आएगा और